Today you are late. Mohammed Surbe, can you hear me? Okay. Oh, Madhav Tiwari is also not here. सर वो नेट रुक रुक के चल रहा था इसलिए। अच्छा 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 वेदांशी माधव तिवारी इज ऑल्सो नॉट देयर. ओके, हो सकता है लोग बाद में ज्वाइन करें. नीलेश इज हियर. निशांत इज हियर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. मुझे बताओ आज क्या करना है मुझे. व्हाट आई हैव टू डू टुडे. सर आज 4th चैप्टर चालू कर देते हैं. क्रेडिट की पीपीटी पे बात करेंगे सर. आप पीपीटी में मुझे बताओ कहां से शुरू करना है. सर कौन मैं से शेयर चैप्टर? करता हूं फिर मुझे बताना है. वी आर स्टार्टिंग है. Okay, लेट sir. द पीपल टू जॉइन लेटर. नो प्रॉब्लम. You can see my PPT. Yes, sir. Yes, All sir. right. Yes, sir. Now see, in the last class, I have completed this introduction, ना? Yes, sir. पूरा तो चालू नहीं करना है. कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो तो उस पर बात कर सकते हैं आज अपन लोग. See, this was the introduction, right? So I've already said it that in the introduction, the physical fitness, wellness, and lifestyle. What is the importance? Why we are studying this? Why we should study this? हाँ? क्यों पढ़े? किस चीज के लिए पढ़े? Why physical fitness is important? Why wellness is important? And the lifestyle is important. Positive lifestyle, right? So man is said to be the man of action, and his activities are full of movement. And for this, physical fitness is required. Physical fitness and wellness plays an important role in fulfilling the objective of physical education. Now, if we will go in the first two lines, man is said to be the man of action. Man can be called man until unless he is moving. अगर आदमी चलना फिरना बंद कर रहे, मूवमेंट बंद हो जाए उसके, तो he cannot be called a man. He is dead basically. So man said to be the man of action. जब हम मूवमेंट करते हैं, हमारे मूवमेंट लगातार होते रहे, then only we can say the person is alive and his activities are full of movement. Whatever the movements we do from birth to death, our total activities are based on the movements. And for this, if we want to make our movements perfect, effective, efficient, then we have to be more physically fit. That fitness is required. Physical fitness is needed. So physical fitness and wellness plays an important role in fulfilling the objective of physical education. In the first chapter itself, we have studied about what are the objective of physical education. A person should be physically fit, mentally alert, socially well adjusted, emotionally balanced, and spiritually uplifted. These are the 4 or 5 objective of physical education, right? So until unless the man is physically fit and enjoying the wellness, this plays an important role in fulfilling the objective of physical education. Then only we can achieve the objective of physical education. If we are basically acquiring this all 4 physical, mental, social, emotional objectives, then we can say that we are basically living in a wellness position. So physical fitness and wellness program are used as one of the mode through which the aim of physical education can be achieved. What we have understood, physical fitness and wellness programs are used as one of the tool, one of the mode through which the aim of physical education can be achieved. The aim of physical education is what? Wholesome development of the personality of a child. Wholesome development of the personality of a child. Now, what are the components are involved in wholesome development? Physical, mental, social, emotional. These 4 components or 5 components are involved in
aim of physical education, right? So that complete wholesome development of the individual. Today, man, life is full of physical and mental stress, which can be relieved only if he is physically fit and psychologically balanced and socially well adjusted. आज अगर हम सिनेरियो देखें सोसाइटी का, it is full of physical and mental stress, lot of work to do, lot of stress to achieve that targets, that goal which we have set it. This all can be relieved only if we are physically fit. अगर हम physically fit हैं तो हम कोई भी physical task हमको मिले that we can accomplish. अगर हम mentally strong हैं, psychologically balanced है तो हमारे mental stress कम होंगे, socially well adjusted है तो हमारे stress कम होंगे, and thus physical fitness and wellness are matter of concern for optimum development of an individual. And because of that only, if you want to really achieve the aim of physical education, then the physical fitness and wellness are matter of concern. आज की तारीख में हमारी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखना और मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना is become the matter of concern for each and everyone to acquire the optimum development of an individual. आज भी अगर हम ये कोरोना वायरस के कारण जो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बातचीत कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद दिस सिचुएशन. It is also required, still it is exist. You have to have the strong immune system. If you want to improve your immune system, you have to have the physical fitness. If you want to come up with that mental stamina, you have to be strong enough mentally so that you should be able to just keep your head at one balanced way, right? So this is also existing in present scenario. Physical fitness, mental fitness, social fitness, emotional fitness, these all are still become very important for our life. If we want to survive for further, then we have to look after ourselves in a proper way. It brings up the optimum health and also help the society to create a healthy environment. It brings up the optimum health. If you participate in physical fitness program, you are physically fit, mentally alert, socially well adjusted, emotionally balanced, then it brings up the optimum health and also help the society to create a healthy environment. क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आप लोगों को पॉजिटिविटी शेयर कर पाएंगे, आप अपने आइडियाज को पॉजिटिव रखेंगे, आप लोगों को बात करेंगे तो वो पॉजिटिव उनको करेंगे, टू ग्रो टू द मैक्सिमम so that we can come out from this situation, right? Environment to grow up to the maximum. It is a pride of the nation. फिजिकल फिटनेस एक किसी देश के लिए प्राइड होता है कि उसके सिटीजन्स कितने फिट हैं, कितने इमोशनली बैलेंस्ड हैं, कितने सोशली वेल एडजस्टेड हैं, कितने मेंटली स्ट्रांग हैं. It is the pride of a nation, right? A healthy and fit society also fulfills the WHO objective. Healthy and fit society also fulfill the WHO, World Health Organization objective. What is the objective of the World Health Organization? Live most and serve the best. If you are having a better quality of society, healthy society, fit society, then it also help in fulfilling this. Live most and serve the best. By meaning of physical fitness, wellness program, good lifestyle, it can be achieved. Live most and serve best can be achieved with the help of physical fitness program, wellness program, good lifestyle, and this can be achieved. Apart from this, a healthy living also possession. It is also a possession, means wealth. It can be purchased, but it has to be earned through a daily routine of physical exercises. Apart from this, a healthy living also a possession. It cannot be purchased, but it has to be earned through a daily routine of physical exercises. मतलब जो healthy living है, ये क्या है? एक हमारी धरोहर है, ये हमारे पास में, ये हमारी एक wealth है, which cannot be purchased, but it can be earned with the help of daily routine of exercise. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी. अगर ये कोरोना भी नहीं स्प्रेड हुआ होता और उस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे होते तब भी ये इंपॉर्टेंट था, और आज हम इस
कोविड-19 के एरा में जो हम लोग अभी हैं, उसमें भी ये और ज्यादा रिलेवेंट होके बाहर निकल रहा है. So this is shows that the physical education is very important, right? It cannot be avoided. It cannot be basically overlooked. Each and every person has to be physically fit, mentally alert, socially well adjusted, emotionally strong, and spiritually uplifted. Until unless you try to have this kind of approach, it's very hard to survive in this present scenario in which we are all are existing, right? So remember, we have to be very tough. We have to change some lifestyles. Why? The reason is now we are moving towards the new normal. The normal will never come. Normal will never come. Now new normal will come. And when we talk about the new normal, in that new normal, we have to have certain changes in our lifestyle, in our approach, in our own physical fitness, on our wellness. This all we have to look after now in a new scenario, and according to that we have to make the changes in our life. It may be healthy habits, it may be hygienic habits, it may be behavior. This each and everything has to be going to be changed now, and for that we have to prepare ourselves. And here the physical education plays a very important role, in which it guides us, it motivates us, it basically shows the path how we can have the positive changes, and we can move further in this adverse situations. I hope I have made it very clear about the introduction of this physical fitness, wellness, and lifestyle. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Very nice. Very nice. Right? So next slide is here. Here we are talking about the physical fitness. Now the physical fitness is having the 5 components which I have shown you earlier. What are the physical fitness components? I will show you here. Strength. Can you see here? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई पढ़ेगा? जहां मेरे कर्सर जा रहा है वहां पे कोई पढ़ेगा इसे? Yes, sir. हाँ, बोलो. Components of physical fitness. Right? First is, Strength, second is ability, speed, endurance, endurance, then speed, and then flexibility. flexibility, और ये then coordinative abilities. right. और यहाँ पे क्या है देखो, strength, speed, agility, coordinative ability को agility भी बोलते हैं, right? Flexibility, endurance, ठीक है? This is one, right? The power and strength is come together, so only 5: strength, speed, agility, flexibility, and endurance. These are the 5 components, and here I have elaborated each and everything. Strength is ability to overcome the resistance. Endurance is the ability to resist fatigue. Speed is ability to move the body as fast as possible. Coordinative ability of an individual to do various relative activities properly as effectively. Flexibility, it is the range of movement of the joints, right? So I have just elaborated each and everything here. Is that clear to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वो नोट डाउनलोड कर रखा है आपने लैपटॉप पे? Yes, sir. कैन बी यूज इट हियर. हाँ, तो उसको यूज किया करो जिससे मुझे दिख जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Meaning of physical fitness, right? Here I have shown you the meaning of physical fitness. Meaning of physical fitness. Physical fitness means the capacity to do the routine work without any fatigue or exertion. And after doing the work, the person has the power or strength to do some more work, and recovery is quicker. That is the meaning of physical fitness. Right? Now we will come on the slide.
It is the capacity of an individual to do work effectively with joy and pleasure. After the work is over, he still has the sufficient capacity to do the work without any exertion. Moreover, recovery is faster and quicker. Right? There are different views regarding the physical fitness. Some says it is related to task or work. Some consider it is a good looking physique. Some may consider it as a proper functioning of physiological system, whereas it is a term with wide meaning. It is more than the possession of the strength, speed, and endurance. The person who remains energetic, enthusiastic, and cheerful is doing his work is said to be physically fit. Thus, it is physical work output of an individual. The ability of physical fitness varies from person to person. It depends upon the nature of the size, work, safe structure, age, sex, and adaptability of an individual. Different games require different level of physical fitness. Depends upon the type of activity, event, game, and sports. So physical fitness requires efficient motor mechanics, and that is movement of the body. Efficient organic mechanism, that is physiological functioning, and efficient mental functioning, that is psychological setup. A fit individual possesses all these. According to the Webster Encyclopedia, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue, moreover, to participate in playful activities and still have the reserve energy in enough capacity to meet any emergency. It means the different people have given the different definitions. When we talk about the physical fitness to a doctor, what the doctor suggests, that if a person's all the organs are functioning properly, then the person is physically fit. When we talk to an actor, what is physical fitness? Then the actor says that if the person is able to act properly, he is able to give the proper reaction and the facial expressions, then the person is fit. Means each and every professions is basically try to justify with their own definitions. But after taking this all consideration, what we have found that if you are participating in physical fitness or in the games and sports, then type of activity, if you are participating in different games or sports, you require different level of physical fitness depending on the type of activities, events, games and sports. So physical fitness requires sufficient motor mechanism. मतलब आपकी बॉडी कितनी इफेक्टिवली मूव करती है, that is movement of the body. Efficient organic mechanism, it is physiological functioning, how your organ functions in that when you play. And it is efficient mental functioning, that is psychological setup, how better you are able to take the decision during the games condition, during that practice session, during that match, how quickly you are able to take the decision. A fit individual possesses all this. तो एक फिट आदमी के लिए फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, साइकोलॉजिकल फिटनेस भी जरूरी है, फिजियोलॉजिकल फिटनेस भी जरूरी है. Right? This all is needed. So according to the Webster Encyclopedia, final definitions comes out. It is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. मतलब एक आदमी तब फिट कहलाएगा जब वो अपने डेली रूटीन की एक्टिविटीज को अच्छे से लगातार इफेक्टिवली करता है विदाउट एनी फैटिग, एंड मोर एवर टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटी. उसके अलावा वो लीजर टाइम में प्लेफुल एक्टिविटी में भी इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करे and still have the reserve energy or reserve enough energy capacity to meet any emergency task. अगर अचानक कोई काम आ जाए तो उसको भी वो अच्छे से कर ले. That is called physical fitness. Is that okay? Any doubt? Any doubt? Hello? Hello? No, sir. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. देखो मेरे पास में ये है, दिखा? क्या दिखा?
Thumbs up. हाँ, तो ये आपके पास भी होगा. इफ यू आर ऑन दी लैपटॉप और डेस्कटॉप, you can download the extension, Google extension with Nod, N-O-D, Nod, right? रुमिशा पठान वापस आ गए हैं, वेरी गुड. All right. Now I am again coming back to next slide. David R. Lamb also given the definition of physical fitness. He said it, the physical fitness is the capacity to meet the present and potential, means future, physical challenges of life with success. Dr. Colores says, successful adaptation of the stress of one's lifestyle. That is also can be called physical fitness, right? So different people have given the different definitions, but everybody is basically trying to say the same thing. So don't get confused. Benefit of physical fitness, right? When you do that regular physical fitness exercises, what happens? Your heart becomes stronger and work more effectively. मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया ना कि मान लीजिए हमको ग्राउंड फ्लोर पे ही पानी लेना है, लेकिन डायरेक्ट नल के पानी के कनेक्शन से पानी किचन में नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, छोटी मोटर लगा के बटन चालू कर देते हैं, पानी फर्स्ट फ्लोर पे आने, वो ग्राउंड फ्लोर पे आने लगता है. लेकिन मान लीजिए पानी को अगर थर्ड फ्लोर पर भेजना है तो वो छोटी मोटर काम नहीं करेगी, है ना? तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको बड़ी मोटर लगानी पड़ेगी. बड़ी मोटर जब चालू करेंगे तो थर्ड फ्लोर पे पानी जाएगा. लाइकवाइज योर हार्ट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड वर्क मोर इफेक्टिवली. मींस व्हाट? हाउ मेनी टाइप ऑफ द मसल्स आर देयर इन बॉडी? कैन एनीबॉडी टेल मी टाइप ऑफ मसल्स? किसने बायो लिया है? Sir, 3 types. Three? Sir, 3 types. Okay, tell me the name. Cardiac. Smooth muscle, cardiac muscle, Cardiac. And cardiac muscle. Sorry, दोबारा बोलो. Sir, striated muscles. Voluntary, involuntary और Cardiac muscle. हाँ, ठीक है. नाउ तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसके? कार्डियक मसल्स के बारे में. सो दिस वी हैव अंडरस्टूड दैट द हार्ट इज आल्सो ए मसल, एंड दिस आल्सो वी हैव नो दैट व्हेन वी डू एक्सरसाइजेस our muscles get hypertrophied because of sarcolemma, right? As the other muscles also get hypertrophied or larger in the shape, the heart is also get exercised when we do that regular physical exercises. So the size of the heart is also increases. That is called athletic heart. एक नॉर्मल आदमी का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है बताओ मुझे. एक नॉर्मल आदमी का हार्ट उसके पाम शेप का होता है, जितनी उसकी फिस्ट कंट्रोल होती है, ठीक है. लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका हार्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होता है. क्यों होता है? बिकॉज हार्ट इज ए कार्डियक मसल्स, इट इज ए मसल्स. व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, बिकॉज ऑफ दैट रेगुलर एक्सरसाइजेस, योर हार्ट is also get hypertrophied, and when you are having the strong and little bigger size of heart, that heart pumps that blood very effectively and efficiently in your different parts of your body. So your heart becomes stronger and work more effectively. You can lose weight if you combine exercise and healthy eating. If you are doing regular exercises and eating balanced diet, required amount of calories if you are intaking, then and doing the regular exercises, it helps in controlling your body weight. I will not use the loose, but controlling the body weight. You always remain in a fit state. You feel better about yourself. जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं, अच्छे से खेल के आते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, कभी खेल लेते हैं, यू फील लाइटर. यस और नो? यस और नो? yes sir, Yes, sir. यस लाइटर. यू अब जब पसीना खुद का निकाल के आते हैं ना, आपको लगता है हाँ
आई एम सेटिस्फाइड, पूरी एंजाइटी, पूरा स्ट्रेस, everything goes away. So you feel relaxed and better. You are less likely to be anxious or depressed and feel more positive. जब आप खेलने रेगुलर, when you play, when you participate in physical exercises, when you go for jogging, when you go for cycling, or when you play some game, what happens? That anxiety or depression all goes away. You become more positive. You feel good. You know, all negativity goes away. So that is the benefit of physical fitness or exercises. You may be able to bring down a slightly raised blood pressure to the normal. आपके ब्लड प्रेशर जो है आपका बढ़िया बॉडी के हिसाब से मेंटेन रहता है. यू आर लाइकली टू ड्रिंक लेस अल्कोहल एंड कट डाउन और स्टॉप स्मोकिंग. खैर ये काम तो मेरे बच्चे करते ही नहीं है. दे विल नेवर डू. आई विल नेवर डू. या आई विल नॉट डिस्कस इट. ऑलराइट. खुशी बेटा माइक कंट्रोल करो. खुशी गुप्ता जी माइक कंट्रोल करो. शाबाश. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज you are less likely to suffer from low back pain. लो बैक पेन किसको होता है? जिनकी बैक मसल्स वीक होते हैं. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग रेगुलरली, व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन फिजिकल एक्सरसाइज at least 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 1 hour, then what happens? This suffering with the lower back pain chances are get minimized. There are less chances that you suffer with the back pain, right? घर में अगर मम्मी नहीं करती एक्सरसाइज, motivate her. If your father is not doing exercise, motivate them. If your brother is not playing, motivate them. If you are not doing, motivate yourself. The 1 hour or 40 minutes thrice in a week is more than sufficient, but well vigorous form of activity, right? You feel positive benefits if you have a specific health problem, such as lung disease, diabetic, arthritis, renal diseases, or have had an ऑर्गन ट्रांसप्लांट. ये अपने काम की चीजें नहीं है, लेकिन हम अगर बीमार भी हैं और बीमारी से बाहर निकल के रेस्ट के बाद में प्रॉपरली हम एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो ये सारी बीमारियां हमारे पास आने के चांसेस ही नहीं है ना. अब मैं कई बार देखता हूँ लोग कहते हैं अरे वो डॉक्टर ने बोला है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप थोड़ा अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कीजिए, रेगुलर वॉक कीजिए, थोड़ा खेलिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अब आपको शुगर हो गया, अब आप एक्सरसाइज कीजिए. तो भाई जब डॉक्टर ने आपको बताया तब क्यों कर रहे हो? अगर आपने शुरुआत से ये सब किया होता और रेगुलर इन चीजों में इन्वॉल्व होते तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू पीपल आर अवेयर्ड पीपल, यू आर हैविंग दैट इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आप उन सारी चीजों में ट्रैप हो, उससे बेहतर है कि आप अपना ख्याल आज से ही रखना शुरू करें. यू शुड नॉट गेट ट्रैप्ड विद सच काइंड ऑफ द डिजीजेस. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Right? Shall I move further? Yes, sir. Okay. The meaning of wellness. In the PDF, I have shown you what is wellness. So, wellness is the capacity of an individual by which he leads a balanced life. Physically fit, mentally alert, socially well adjusted, emotionally well and spiritually uplifted. Means lead a balanced life. ना हारे में हार है, ना जीते में जीत. ठीक है ना? Evenness in all circumstances. If you get success, evenness. If you have lost something, no problem. When a person is able to maintain such kind of the evenness in his life, balanced life, then we can say the person is enjoying wellness position. Now what is the meaning here? Wellness is a vast term, involves health education, physical fitness program, leading to the optimum development of the individual. So thus we can say that the capacity of a person to lead a well-balanced life relating to physical, mental, social and emotionally balanced life. वही physically fit में अगर हम हैं तो हम wellness में हैं. In fact, it is the ability of an individual to lead mentally, emotionally and emotionally balanced life along with physical fitness.
In simple word, we can say it is the deliberate movement to improve health and fitness for achieving the highest potential of life. Deliberate efforts, ठीक है, to improve health and fitness for achieving the highest potential of life. Live most and the serve best. Wellness keep us fit psychologically, emotionally, socially, and with healthy life. So wellness program give us the idea how we should remain fit and healthy. It may be to the meaning of proper exercises, it may be medical care, it may be proper diet, stress management, hygienic habits, good working and living conditions, weight control, no towards the hazardous things like drugs, smoking or alcohol, etc. And that one can lead a healthy life. Person can live a healthy life. All these help us to deliver well-balanced life and leave the foundation of good health and optimum healthy livings. Thus, we can conclude that will it be the state of optimum well-being of an individual and it guide towards the high level of health. कहने का मतलब हमको अपने जितने भी कंपोनेंट्स है वेलनेस के उनको क्या करना है, अचीव करना है. कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस कौन से बताए थे मैंने, ये इंपॉर्टेंस था. कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस: सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इन्वायरमेंटल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस. ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले दिखाई है. नाउ द नीड ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल. अगेन आई हैव शोन यू हियर लाइफ स्टाइल. मेरे कर्सर पर ध्यान रखना. ए वे ऑफ लाइफ or style of living that reflects the attitude and values of a person or a group, that is called lifestyle. Now here, human life is based upon the body he keeps. All the activities in the life are done with the help of healthy and fit body. Nature has created humans to perform various type of activities efficiently. Today modernization has made humans life easy as most of the work is performed by the machines. The sedentary lifestyle has reduces the human efficiency. The lazy lifestyle of humans has also led to many health problems like cardiac disorders, diabetes, cancer, asthma, obesity, and many more chronic problems. Today our environment is stressful. Poor diet, hygienic habits is very unhygienic habits having increase in health problems of humans, and today we desperately need physical fitness, wellness and healthy lifestyle program to improve our abilities and reduce the health problems. It means the meant towards the progress and the prosperity. अब इसको ध्यान से समझ लो. जितना भी मॉडर्नाइजेशन हुआ है उसने क्या किया है, हमारी लाइफ को सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाके ढकेल दिया. पहले लोगों को कहीं जाना होता था तो दे यूज्ड टू गो ऑन वॉक, पैदल चलना पड़ता था. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कार वार खड़ी करके अब पैदल वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं. हम सारी फैसिलिटीज को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं. पहले पंखा चलना होता था तो आपने देखा होगा हम हाथों से हिलाते थे. हम लोग, आप लोग नहीं, आप लोग तो बटन वाले हैं. बटन भी छोड़ो तो रिमोट का भी छोड़ो, अब तो वो सेंसर्स घर में लगने लगे. क्लैप किया फैन ऑन, क्लैप किया लाइट ऑन, मूड के ऊपर लाइटें लगने लगी. आपका मूड सैड है, आपने सेंसर आवाज लगाई, वो कौन सा, क्या नाम है उसका गैजेट का, वो गूगल एलेक्सा आई एम सैड प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स. तो एलेक्सा लाइट बंद कर देती है. एलेक्सा को बोला आज आई एम वेरी चीयरफुल, लेट्स हैव द म्यूजिक, तो एलेक्सा म्यूजिक चालू कर देती है. यस और नो? यस सर. है ना. तो हम कितने पैसिव लाइफ में चले गए हैं. हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, एक्टिवनेस कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्नाइजेशन. और उसका रीजन क्या हो रहा है, उसका रीजन ये हो रहा है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स में फंसते जा रहे हैं. हमको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमको डायबिटिक हो रही है, हमको कैंसर हो रहा है, हमको अस्थमा हो रही है, ओबेसिटी हो रहा है. इन सबसे अगर हमको बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर टर्न अप करना पड़ेगा. इस कोरोना ने देखो कितने लोगों को घर में मजबूर कर दिया अंदर रहने के लिए.
बाहर निकल रहे हैं तो नाक पे कपड़ा बांध के चल रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े पहले जब चलते थे तो वो सर पे भी लपेट के चलते थे और नाक को भी ढक के चलते थे। अब वापस से वही होने लगा है कि नहीं होने लगा है। पहले हमारे घरों के सामने पानी भर के रखा रहता था हौदी के अंदर। जब भी घर में आते थे तो बाहर पहले जूते उतारते थे, मुंह हाथ धोते थे, कुल्ला करते थे और उसके बाद में घर में घुसते थे। और अभी क्या करते थे हम लोग, जूते पहन के किचन तक में चले जाते थे। यस और नो? तो ये सारी चीजें हमको वापस कहां ले जा रही हैं? हमको पॉजिटिव लाइफस्टाइल की तरफ। और ये आज भी जरूरत है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? Today we desperately need physical fitness, wellness and healthy lifestyle programs to improve our abilities and reduce the health problems. It means the men towards the progress and the prosperity. If we will follow this healthy lifestyle, then only this man can move towards the progress and the prosperity. ठीक है भैया? फैक्टर अफेक्टिंग ये सब मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। बोलेंगे तो अगली क्लास में फिर कर दूंगा। हेल्थ इंडिकेटर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, आई होप आप मेड इट क्लियर। ये अगली क्लास के लिए रखता हूं, ठीक है? ओके। कितने 2-3 लोग गायब हो गए भाई बीच में। चलो खैर कोई बात नहीं। और कोई बात बोले? कोई डाउट आज तक, आज जितनी भी बात की हम लोगों ने? इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क। हेलो मोनी बाबाओ, हेलो। अरे मोनी बाबा। Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. No, sir. मैं पढ़ाता हूँ No, sir. या बिल्कुल ही समझ में नहीं आया? सर आया। सर आ गया समझ में। सर आ गया। तुम लोग यार कोई फीडबैक नहीं देते हो अच्छे से यार, फिर मैं इंप्रूव कैसे करूंगा तुमको पढ़ाने में? क्यों? अगर फीडबैक अच्छे से नहीं दोगे तो फिर मैं तुम लोगों को कैसे अच्छे से पढ़ा पाऊंगा? ठीक है, खैर अगर कभी कोई कमी नजर आती है बेटा प्लीज गाइड मी। हाँ, बोलेगा, जरूर बोलेगा। एंड आस्क, कभी भी कोई चीज पूछने से शर्माना नहीं है। बीच में आवाज लगा सकते हैं सर, तो मैं रुक जाऊंगा। ओके कुशाग्र? यस सर। ओके। और ये नए बेटे कौन कौन है? मिश्रा जी Yes, sir. किधर है? अच्छा, देवांशी नाम है इसका। ओके। सुहानी बेटा, यस सर। कोई परेशानी? नहीं सर। पूर्वी बेटा, कोई परेशानी? No, sir. वेरी गुड। कनक बेटे, Yes, sir. परेशानी? No, sir. ओके। खुशी? Yes, sir. फाइन? Yes, sir. सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ओके, राइट। वो शिवम शर्मा था, कौन था? शिवांश शर्मा, नया बेटा। हाँ ठीक है बेटा, कोई परेशानी? नो सर। पकड़ में आ रही है बातें? यस सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो तो एक ही बार में समझ में आ जाता है। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ सर। अबे बदमाश। चल ठीक है, गुड। चलो थैंक यू बेटा। रुमिशा थैंक यू। Thank you, sir. विधांशी थैंक यू बेटा। दिशा थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर। सायराम सर। सायराम सर। सायराम सर। बाय। Sairam, sir. Thank you.